So supposedly, let us say this interview goes really bad for some reason. I hope it doesn't, right? So you might say that अरे मेरा तो speaker जो था वो बहुत बेकार था, पता नहीं किसको interview के लिए बुला लिया, right? But when it goes good, you might say that oh, I am very good at handling interviews. So कोई भी failure होता है we attribute it to the other person, कोई भी credit होता है then we attribute it to ourselves. So there are these biases in the way which we think about other people. हम लोग दूसरों की fault को ज़्यादा बड़ा करके देखते हैं, अपनी fault को बड़ा करके नहीं देखते हैं. So all these are तो इसमें आप नेताओं का एग्जांपल लेते हो because they are very good at these things. So अरे भैया नेताओं का एग्जांपल आप वीडियो पे दिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा. नहीं you know explaining class में समझाने के लिए you can very well give a very well example. Class में I do take specific examples, but I won't take them here. But I'll give you a scenario, right? And this is true for all political parties. Actually, generally, I criticize all the political parties on certain fronts or not, because most of these things depend upon a distinction that we make, which is us versus them, right? So, and as soon as I make this distinction, us versus them, this might be girls versus boys, one religion compared to other religion, any kind of a distinction, then we, in some sense, dehumanize the other person. We don't consider that person as an individual, but we consider them as some person object. Who possesses not just object, but what you will call as a stereotype, right? Okay. कि अरे भाई ये तो एशियन है तो ये तो मैथ्स में अच्छा होगा, या ये कोई वुमेन है तो ये तो खराब ड्राइवर ही होगी. तो एक सेंस में हम उसका इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उसको छीन ले रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं तुम तो ग्रुप बता रहा है, जो तुम्हारा टैग लग गया है तुम वही हो. नाउ सोशल साइकोलॉजी का एक बड़ा एप्लीकेशन इसी चीज पे है कि हम ये टैग कैसे हटा सकते हैं. हाउ डू वी चेंज आवर थिंकिंग प्रोसेस सो दैट वी आर एबल टू एड्रेस कि भाई यहाँ पे कोई मेरे साथ प्ले करने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके रीजनिंग फॉल्स है. या कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ गया, मैं बोला कि भाई मेरी पार्टी को वोट दो, तो आप बोलोगे हाँ इतने अट्रैक्टिव कोई लड़की है, उसने वोट मांगा है, जरूर इसकी पार्टी भी अच्छी होगी. बट वहीं पे कोई आया जिसको की हाइट वाइट कम है, चेहरा में देखने में अच्छा नहीं, उसने बोला मुझे वोट दो. ऑल्दो दोनों सेम बात कह रहे होंगे, बट आप वोट लड़की को दोगे. नाउ दिस इज समथिंग दैट इज नोन एज हेलो इफेक्ट. अगर मैं देखने में अच्छा हूं तो मेरे पीछे एक हेलो है, तो मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता. And this is the bias in the way we think. And advertisers, politicians, anybody who wants to convince us to do something, they actively use it. That's the theory about using pretty faces, more or less. Yeah. तो हाँ उस तरीके से काफी ड्राइव होता है behavior. So that is one of your subjects. That is the primary subject जो आपका जिसने आपका इंटरेस्ट जो आप इस फील्ड में अभी इंक्लूडेड है. बट क्या what led you to this subject? What led you to this sort of thing? Because a lot of times a lot of bullshit thoughts occur to you that get you into a certain kind of spiritual zone there. You think that you should take this path, and sometimes there is actually something that happens that a real life example जैसे होता है लाइफ में कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है जिस वजह से मुझे जानना है ये बात. So that's why I want to study this subject. Unfortunately, my journey is very boring, so I didn't have any such revelations for my part. The idea basically is that, so I'll just make a distinction first. So my teaching definitely does involve a lot of social psychology, but my research is mainly on something that is known as cognitive science. Now, so there again, you are on a quest to find the question मैं कौन हूँ, that's as far as I understood. So now again, so, that's so मैं कौन हूँ वाला question, right? is again something that an individual who wants to go on a journey of defining oneself tends to take. So but my journey is a boring one, so boring part, not really entertaining one. Okay. So basically my interest comes from so I have a programming background, so I have been interested in computers and programming languages since childhood. So we created something that is known as a motion detector, which was a computer program that can detect whether something is changing or not. This is way back in school, right? Now, one thing that I immediately notice is that things that we do very easily, for example, अगर
if you move, it's really very easy for me to see whether you are still or moving. But एक कंप्यूटर पे उसी को implement करने के लिए जान निकल जाती है. And even now, computers are not as good at perceiving things, objects, as humans are. तुम मेरे को देख सकते हो अगर मेरा चेहरा ऐसे है ऐसे, I don't change. But computer face recognition algorithm इस चेहरे को नहीं पहचान पाएगा. Right? So it will only detect the front face. So that is one of the issues that really triggered my interest in human mind. Now the question of मैं कौन हूँ is not, I'm not the first one to ask that. I hope, hopefully not the last one. अगर पैंडेमिक ने छोड़ दिया हम लोग को तो इंडिया इज लैंड ऑफ सीकर्स, तो ये सवाल पूछने वाले आते रहेंगे. It goes back to our ऋषि मुनीस. अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो आप एरिस्टोटल की बात करेंगे. So everybody has been interested in question of मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ में. Right. Now the thing that made it interesting for me is, so I'm also an avid gamer. I play a lot of games even now. Okay. And the thing that really interested me in this particular field is कि आप अलग-अलग जब environment इतनी ढेर सारी information लेते हो तो it provides you a way to change your reality. आप यहाँ से चले जाते हो किसी game के अंदर and you become a part of that game, so engrossed in that particular game. Or if you're watching a video by someone who talks really interesting, you become part of that reality. So यहाँ पे I was interested in looking at कि आपका exactly मैं कौन हूँ, क्या इस रियलिटी से भी चेंज होता है, क्या मेरे पास एक रियल वर्ल्ड के अलावा एक सोशल वर्ल्ड है, एक साइबर वर्ल्ड है, उससे मेरी खुद की आइडेंटिटी चेंज होती है. तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय थिंग. एज आई सेड, नॉट रियली एक कोई बढ़िया सा रेवलेशन हुआ. नहीं, that's pretty interesting itself, क्योंकि गेम से, you know, I have seen that game